Welcome students. So today we have to read about Thevenin's theorem. Thevenin theorem basically provides us with a technique that by which a fixed part of the circuit can be replaced by an equivalent circuit. That means अगर हमारे पास एक we have any two terminal circuit, so we can replace that circuit by an equivalent circuit so that the calculations which we had to follow otherwise without using these theorems would get reduced. So what we do in this Thevenin theorem is that we take a linear circuit into consideration and replace it by another circuit which has an equivalent voltage and an equivalent resistance. In case of Thevenin network, we call that equivalent voltage as the Thevenin voltage or open circuit voltage. And the resistance, that equivalent resistance, is called as RTH. It is represented by RTH. That is an equivalent resistance or Thevenin resistance. TH stands for the Thevenin. So that means if we have a general circuit, for example, if we have a circuit like this. This is our linear two-terminal network. If we have a linear two-terminal network, see, these are the two terminals A and B, and this is our load. So if we have to replace this circuit using Thevenin theorem, so the equivalent circuit will be like this. It will be this will be VTH, this will be RTH, and this will be the load. This is terminal A and this is terminal B. So you can see that a complete equivalent circuit, whatever it has, the resistances, series resistance, parallel resistances, number of voltage, so that has to be converted into an equivalent resistance having these two, RTH and VTH. So as far as the statement goes for this Thevenin theorem, it states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH in series with that of the equivalent resistance RTH. Okay? Now how you will get this VTH and how you will get this RTH? In that consideration, you have to think that if we have a voltage source in this linear network, अगर हमारे पास कोई voltage source है इस linear network में, so we have to basically, what we do in general, like you did in superposition principle, that if we had number of voltage sources, so we took one and voltage source at a time, and then the rest of the voltage sources were short circuited. What does this short circuit means? It means that you are basically replacing that voltage source by an internal resistance. जो भी उसकी internal resistance होगी उस source की, you are replacing that voltage source by short circuiting it. Similarly for current, for example, we have a current source, and for current source what we do, we open circuit it. That means open circuit करने का मतलब है that we are keeping an infinite resistance in between the two, है ना? तो we have an infinite resistance. So this is what you have to do in case of Thevenin theorem. One more time I am trying to explain it. अगर आपके पास कोई भी linear टू टर्मिनल नेटवर्क है, उसको आपको एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है जो कि इस तरह का होगा. इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें सोर्सेज होंगे, ठीक है, वट एवर द सोर्सेज विल बी, यू हैव टू गेट एन इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ दैट. तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ वोल्टेज सोर्स इन इट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लेस इट बाय अ शॉर्ट सर्किट.
शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है दैट मीन्स यू आर रिप्लेसिंग दैट वोल्टेज सोर्स बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस if it has some. If it has no internal resistance, that has not to be taken into consideration. ठीक है. Similarly, for a current source, what you have to do? You have to replace it by an open circuit. Open circuit itself means yet we are replacing it by an infinite resistance. ठीक है. So this is how you have to do it. So suppose we will take a circuit into consideration. We will take a general circuit into consideration and see how Thevenin theorem operates in that case. Suppose we have this circuit. This is a battery. This is a resistance R1. This is a resistance R2. And this is my load resistance between terminal A and terminal B. And this is the battery value. E is the battery energy. And see, I am showing here that R, it has an internal, this battery has an internal resistance R, and RL is the load. So this is my general circuit. Now as I have to solve this circuit, or I have to reduce this circuit using Thevenin theorem, so how will it behave now? See, the equal. Now I have to replace this voltage source E, I have to replace it by its internal resistance. Now how will it be then shown in the circuit? It will be like this. So this R is the internal resistance of this battery. If it is not written there, for example, if R was not shown there, that means we do not have any internal. We are not taking into consideration the internal resistance of this. Then it would have been like this. ठीक है. So since we are taking into consideration R, so we have to take this R into consideration while having the equivalent circuit for this circuit. ठीक है. तो इस सर्किट के इक्विवेलेंट के बनाने के वक्त वी हैव टू टेक R into consideration. So rest R1 will be same, this R2 will be same, and C. So the steps which are to be followed to solve this Thevenin theorem is, सबसे पहला step है, you have to remove load. रिमूव लोड का मतलब ये है कि यू हैव टू रिमूव द रेजिस्टेंस और द लोड दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड इन द सर्किट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ जी RL के थ्रू करंट कितनी है, टेल मी व्हाट इज द करंट थ्रू, क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट थ्रू RL, इफ दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड. तो जिसके थ्रू आपको पूछा गया है, सबसे पहले रिमूव दैट रेजिस्टेंस और रिमूव दैट लोड. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. इफ आई हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि आप बताओ जी करंट थ्रू RL कितनी आएगी, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई हैव टू रिमूव दिस RL. तो जब मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो मैंने उसमें क्या किया, आई रिप्लेस्ड माई सोर्स विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिमूव्ड माई लोड रेजिस्टेंस. वही मैंने किया. तो यहाँ पे जो RL था वो मैंने रिमूव कर दिया. द RL इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल AB. तो इस AB टर्मिनल से मैंने RL को रिमूव कर दिया. दैट मीन्स आई हैव ओपन सर्किटेड इट. ठीक है. नाउ द स्टेप नंबर 2, आफ्टर दिस what is to be done is that you have to calculate the open circuit voltage across the terminal AB. आपने यहाँ पे open circuit कर दिया, you open circuited it. Now you have to determine that V open circuit. Now you have to determine the voltage across this open circuit. As I already told you that open circuit voltage is actually the VTH. That open circuit voltage will act as the Thevenin voltage
विच वी विल गेट एज एन इक्वलेंट वैल्यू एज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसको निकालने के, दैट मीन्स टू गेट दिस VTH, व्हाट वी हैव टू डिटर्मिन, वी हैव टू डिटर्मिन दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस ओपन सर्किट. Once you get this voltage across this open circuit, then you can directly multiply that by, you can get I from this. Then once you get the I drop from this, you can get the voltage V open circuit from this, and then you can solve it. So now the next step that has to be followed is like this. I'll just rub this out now. First was RL removed, second was calculate V open circuit across the removed terminals. So for that VOC किस तरह निकालेंगे आप? If you have been given this circuit, so आपका open circuit voltage किसके बराबर होगा? It will be, जो यहाँ पे voltage होगा, the drop between AB will be basically the drop of R2. Won't it be like that? Drop of R2 resistance. जो voltage यहाँ पे आएगी वही voltage यहाँ पे भी आएगी. That means जो ये V open circuit है, it is the voltage across this R2. ठीक है, तो that will be equal to what? If I is the current flowing through this, so it will be IR2, this V open circuit, it will be current I into R2. So can you determine now I? Can we get the value of this I? This I will be equal to, see, now the step number 3rd. How we will get the I? If I'll write I is equal to this I, the current flowing through this circuit, I, it will be equal to what? What will be, if I am saying I is the current flowing through it? See, the I is the current flowing through it. I is flowing through R1, I is flowing through R2. I into R2 will give me this drop across R2. और वही drop basically act करेगा as an open circuit voltage. ठीक है, तो अब ये I निकालना है. Can we determine I? We can easily get it, isn't it? So if you see that in this circuit so this I has to be got. So I will be equal to V by R is the I, actual normal Ohm's law. So I is equal to V. What is the voltage here? We have the drop of what? E. So E divided by R. What is R? R is basically equivalent, you have to determine. So equivalent of R, it will be basically, see, R, R1 and R2. R, R1 and R2. They will be in what? They will be in series. Why in series? Because see, we are open circuiting it. So no current through this, no current through this. So all R1, R2 and R, they will be in series. है ना? So that will be R1 plus R2 plus small r, internal resistance R. So this is what you got for what? I. ठीक है, so if you will put that I value here, you will get an open circuit voltage. You will get an open circuit voltage, and that open circuit voltage, that is basically, if you will put the value of this I here, you will get the value of open circuit voltage, and that VTH is basically our Thevenin voltage. So we basically got our Thevenin voltage. ठीक है, तो जब भी आप थेवेनियन थ्योरम का अप्लाई करेंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट 2 थिंग्स. कि एक तो मैंने अपने इस सर्किट को इस तरह इक्विवेलेंट बनाना है कि जो भी मेरे इसमें जो फाइनल जो मेरा सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट, उसमें मेरा VTH आना चाहिए और RTH आना चाहिए. VTH क्या होती है? VTH बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज होती है. वो ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपके
लोड साइड से, जहां से आपको निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज, जहां से भी आपको क्वेश्चन में प्रूव बताया गया हो कि हाँ जी इस फलाना रेजिस्टेंस से, इस एलिमेंट से आप अपना इक्वलेंट या करंट निकाले, वोल्टेज ड्रॉप निकाले, वॉट एवर इज आस्क्ड। सो जहां से निकालना है उसको पहले रिमूव कर देना है। वंस यू आर रिमूविंग दैट, फॉर एग्जाम्पल हमें जब यहाँ पे RL से रिमूव करना था तो हमने उसको ओपन सर्किट कर दिया। सो उसी ओपन सर्किट से हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिला, और वही ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा थेवेनिन वोल्टेज बना। ठीक है। और स्टेप नंबर 2, दैट मीन्स VTH पहले निकालना है। VTH, वंस यू गेट द VTH यू हैव टू डिटरमिन देन RTH। ठीक है। RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RTH के लिए क्या करना है, तो सी, आई जस्ट रिमूव दिस। नाउ RTH, अब इसमें क्या है, सो इन ऑर्डर टू गेट RTH रिमूव ऑल द सोर्सेस। ठीक है। सो सिंस वी हैव एन बैटरी सोर्स और since we have a battery source or a voltage source here, so remove it and replace it by an internal resistance like we already did in the previous this. So this is R, this is R1, this is my R2, and this is it. See, now you have to see. So this is basically RL, है ना, this was the load which was open circuited. So you are basically removing this source. Now you have to see from this side. See, when you are seeing, you have to see from, अगर मैं यहाँ से इस चीज को देखूं, टेक टू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। जब मैंने वोल्टेज सोर्स का कंसिडरेशन लिया, आई ओपन सर्किटेड इट एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ द करंट एंड फाइनली आई सॉल्व्ड इट। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी हैव टू से टेक इनटू कंसिडरेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसेप्ट फॉर द सर्किट, तो उस वक्त हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको रिमूव कर देना है, जो भी सोर्स होगा बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और इफ इट्स अ करंट सोर्स तो उसको इन्फिनिट रेजिस्टेंस से, दैट मीन्स वी हैव टू ओपन सर्किट इट। ठीक है। कर दिया वो, तो फिर उसके बाद आपको जिस टर्मिनल, जैसे हमें A और B टर्मिनल से जहां से हमने रिमूव किया था, तो उस टर्मिनल से हमें अंदर की तरफ देखना है इसको। वी हैव टू सी द सर्किट टुवर्ड्स। तो दैट मीन्स अगर हमें यहाँ से, हमें ऐसे मान के चलो, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है तो दिस एंड दिस, सो करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2, सो R1 and R2 will be parallel to each other. Won't they be parallel to each other? है ना, R1 and R2 will be parallel to, या हम इस तरह भी इसको देख सकते हैं, see, this and this, R1 and R, we have no connection here, so R1 and R plus R1, they are in series. ठीक है। तो R plus R1, they are in series, so this is in series, so this is in parallel to what, once you get the R plus R1 here, तो एक ब्रांच, ये एक ब्रांच करंट यहां से जाएगी, एक ब्रांच करंट यहां से, इस तरह देखना है सर्किट को कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो एक करंट यहां से जाएगी, एक करंट यहां से जाएगी, तो these two will be in parallel to each other. तो फाइनल जो RTH का रिजल्टेंट जो आएगा हमारा, the resultant for RTH, it will be basically the sum of the two, R plus R1, and इन दोनों का parallel to R2. So if we'll solve it, we can get, once you solve it, we'll get the value of RTH equals to R2 parallel of R1 plus R divided by R2 plus R1 plus R. So this is what we got for what? Thevenin resistance. इससे पहले हमें निकला इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज, और अब हमने निकाला थेवेनिन रेजिस्टेंस। वंस वी गॉट बोथ द थिंग्स, यही दो आपको डिटरमिन करने हैं व्हाइल सॉल्विंग Thevenin theorem. You have to determine RTH, you have to determine VTH. Once you get RTH and VTH, then what you do, इसको आप इक्वल, अब जो ये सर्किट है, दिस सर्किट, इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इक्विवेलेंट सर्किट विच विल हैव, सी, नाउ इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, दैट विल बी हैविंग
So this is VTH, this is RTH, and this is load. So आपका जो ये वाला सर्किट है, ये पूरा, this got changed into an equivalent circuit having VTH and RTH in series, and the current flow was I, है ना, I was flowing through it. तो that means अगर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला से पुट कर रहा हूँ, डायरेक्टली यूजिंग थेवेनियन फॉर्मूला, that means I will be equal to VTH divided by RTH plus RL. So this is how you can get the value. ठीक है. So this is a Thevenin source, this is a Thevenin equivalent resistance, this is a Thevenin equivalent resistance, this is Thevenin equivalent voltage, and this is the load current. Now you can get the load current through the desired load. So this is the formula which we will get at the final step of solving this Thevenin theorem. So let me take an example for this question, for this theorem, so that we can get the values, so that we can understand what actually this theorem tries to tell us. So let me take a question, numerical problem for this. So this is it, this is the circuit. We have a 9-volt source here. So the question is like this. So we have a circuit like this. So the question is, find the current through 2 ohm resistor using Thevenin's theorem. So using Thevenin's theorem, you have to determine current through this 2 ohm resistance. So our load will become this. So हमारे को इसके अक्रॉस काम करना है. तो इसके अक्रॉस काम करना है, तो स्टेप नंबर 1 ही पहला हमारा था. सो एज पर एज अवर स्टेप नंबर 1 फॉर द Thevenin theorem application is we have to remove this load. जहां से निकालना है उसको पहले रिमूव कर देना है. सो वी विल डिस्कनेक्ट इट. ठीक है. सो वंस वी डिस्कनेक्ट इट, तो ये कैसा सर्किट बन जाएगा? इट विल बी लाइक दिस, 9 volts plus minus. So it will be 4 here, 4 here, 6 ohms. So disconnect it here and this one. So we removed